Assalamu alaikum, boys. Boys, today we will start a new topic: simple interest and compound interest. So, ये simple interest and compound interest is basically everyday mathematics topic, right? और simple interest जो है वो हमारा तो वैसे तो ये काफ़ी जो है वो पुराना टॉपिक है, लेकिन compound interest जो है वो अभी हाल ही में 2 साल पहले जो है वो ऐड हुआ। सही है, ये पहले 2002 के जो है वो सिलेबस में था, उसके बाद ये रिमूव कर दिया गया था। अभी 2018 में इसको दोबारा ऐड किया गया है। सही है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी जो है वो कार बैंक से लेते हैं, राइट, तो आपको बैंक में जो है वो कुछ ना कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है या उसके डाउन पेमेंट जो है वो डिपॉजिट करना पड़ती है, राइट। फॉर एग्जांपल, या अब कार की अगर मैं वैल्यू को, अगर मैं कार की जो है वो एग्जांपल ना दूं, फॉर एग्जांपल यू हैव 1 लाख रुपीज़, और अब अगर आप उसे जो है वो किसी बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स, टाइम कितना है 3 ईयर्स, तो बैंक आपको जो है वो उसका जो रेट जो है वो पर एनम जो है वो 8% है, राइट। सो व्हाट इज़ सिंपल इंटरेस्ट, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे। और आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर एग्जांपल 3 ईयर्स के बाद मेरा जो है वो अमाउंट क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आती हैं किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्टली जो है वो आपका क्या होगा, अमाउंट आएगा, और उसके बाद हम जो है वो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो व्हाट इज द फॉर्म, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज सिंपली इज नोन एज कैपिटल आई, and the formula for the simple interest is PRT upon 100. PRT upon 100. What is P? P is known as the principal amount or borrow. R is known as the rate per annum, like 8%, 11%, and time is in year, like 2 years, 5 years, राइट। इफ द टाइम इज इन मंथ, अगर टाइम जो है वो मंथ की फॉर्म में है, लाइक 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, 13 मंथ, सो यू विल डिवाइड बाय 12। इज इट क्लियर। जैसे अब न्यू इसमें एक और फॉर्मूला आएगा, अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 3 ईयर्स और आफ्टर 5 ईयर्स जो है वो मैंने जो अमाउंट डिपॉजिट किया है, सही है, और उसका जो है रेट जो है मुझे कुछ मिल रहा है, तो आफ्टर 5 ईयर्स मेरा कितना अमाउंट हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस आई। इज इट क्लियर। सो इट इज नोन एज अ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में पहले सिंपल इंटरेस्ट आता है, फिर देन वी विल फाइंड द टोटल अमाउंट, and the formula for the total amount is P plus I. What is P? P is known as the principal and I is known as the interest, राइट। मेरे पास यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की जो है वो कुछ क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखें, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मौजूद है कि एना डिपॉजिट $460 इन अ सेविंग अकाउंट दैट पेड 3.2% सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल एनुअल इंटरेस्ट इन 5 ईयर्स, हाउ मच इंटरेस्ट डिड एना अर्न। अगर मैं गौर से करूँ, गौर से देखें, यहाँ पर जो है वो एना डिपॉजिट, इट मींस व्हाट इज दिस, इट इज नोन एज द पी, right, and what in account 3.2% simple annual interest, what is this, it is known as the R। okay, what is the time, the time is 5 years, how much interest, जब interest की बात आ रही है, so it is saying that simple interest। so what is the formula for the simple interest? Simple interest is equal to PRT upon 100, right? If we will discuss what is P, P is known as $460, right? Or rate is given 3.2%, and time, what is the time? The time is 5 years। is it clear? Okay, now you have to find the amount or you have to find the interest। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। सो व्हाट इज पी? पी इज गिवन एज 460, amount is, rate is given 3.2, time is 5 upon 100। is it clear? When we will calculate, so what is the answer? The answer is 460 multiplied by 3.2 multiplied by 5 divided by 100। सही है। What is the simple interest? The simple interest is 73.6। सिंपल इंटरेस्ट इज 73.6। अगर मैं यहाँ पर अब क्वेश्चन में थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं कि आफ्टर 5 ईयर्स व्हाट इज द टोटल अमाउंट, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल अमाउंट? द टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, total amount is equal to P plus I। okay, so what is P? P is given 460 and the interest is 73.6।
So 460 plus 73.6. So what is the answer? The answer, it will be equal to 533.6. Is it clear? So ये आपका जो है वो टोटल अमाउंट हो जाएगा, राइट? इसी तरीके से अगर मैं फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में भी ये लिखा हुआ है, माइकल बोरोड $375 फॉर अ न्यू बाइसाइकिल. He will pay the money back in 18 months with simple interest of 5.7%. How much interest will pay back? राइट. अगर मैं क्वेश्चन पे गौर करूं, यहाँ पर $370, ये कितना है? माइकल बोरो $375 for a new bicycle. He will pay the money in 18 month. What is the time? Time is in 18 month with the simple interest. What is the simple interest? Is 5.7%. How much interest? How much interest? वो कितना interest जो है वो will pay back, वो आराम से जो है वो पे करेगा, right? तो ये चीज़ आपको करनी है. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लिख दूँ तो इट मीन्स यू कैन सॉल्व इट. फॉर एग्जांपल माइकल borrowed $375. तो व्हाट इज द पी? P is given $375. Is it clear? And he will pay the amount time. What is the time? Time, it will be equal to 18 month. So you, मैंने आपको पहले भी बताया था, if the time is in month you will write in divided by 12. Okay. With simple interest is 5.7%. अब आप लोग ये परेशान नहीं होइएगा कि सर ये क्या है. देखें, जब भी परसेंट की बात आ रही है तो it means that it is given R. So what is R? R is given 5.7%. Is it clear? And you have to find the how much interest will how much interest will Michael pay back. So what is the formula for the simple interest? This formula for the simple interest is SI, yeah, I is equal to PRT upon 100. इज इट क्लियर? ठीक है. अब अगर मैं इसको यहाँ पर जो है वो फॉर्मूले में सारी चीज़ें पुट करता हूँ तो मुझे बताइए व्हाट इज पी. पी इज गिवन 375. ओके. आर इज गिवन 5.7 and the time is given 18 upon 12 divided by 100. Is it clear? Okay, now when we will solve it, for example अगर मैंने जब इसको कैलकुलेट किया, so what is the time? ये मेरा जो टाइम आएगा वो टोटल वो कितना आएगा? देखते हैं इसको. थ्री कितना है आपके पास? ये 375 मल्टीप्लाई बाय 5.7 multiply by 18 divided by 12. Okay, and divided by 100. Okay, so what is the answer? The answer, it will be equal to, what is the simple interest? Simple interest is $32.06. Is it clear? It is the simple, it is a simple interest, right? Okay, just a minute please. Right, now the third part. What is the third question? The third question is saying that Tamika borrowed $300 to buy a digital music player, right? $300. What is the $300? $300 is known as the principal. She will pay the money back in 1 year. What is the time? The time is in year 1 year. And what is the simple interest? 5%. How much money will Tamika pay in interest? Right. So अगर मैं इसका जो है वो डेटा बनाता हूँ तो what is the data? Data आपके पास आएगा. P is given $300. Right. Time is given 1 year. Okay, R is given 5%. Is it clear? Now we will use the formula. What is the formula? I is equal to PRT upon 100. What is P? P is given 300. R is given G. Time is given 1 and R is given 5 divided by 100. Right? When you will calculate, so what is the time? 300 multiplied by 5. 300
multiply by 5 divided by 100. So what is the answer? What is the simple interest? The simple interest, it will be equal to 15, right? So it is your answer, राइट तो ये था हमारा जो है वो सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर मैं यहाँ पर जो है वो सिंपल इंटरेस्ट था, फिर अगर मुझे अमाउंट कैलकुलेट करना है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द अमाउंट? वेल, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई, जो कि मैं पूरा ऊपर जो है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। व्हाट इज द प्रिंसिपल हियर? द प्रिंसिपल इज बी इक्वल टू $300। एंड व्हाट इज द अमाउंट? So what is a simple interest? A simple interest is 15. So what is the answer? The answer is 315. Is it clear? तो ये चीज़ थी सिंपल इंटरेस्ट की, राइट? अब यहाँ जब हम लोग बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, जब हम लोग बात डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका यहाँ पर क्या आता है? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है, हम उस चीज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। इधर देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट में पहले सिंपल इंटरेस्ट आता है, देन वी विल ऐड इन प्रिंसिपल, सो इट विल बी इक्वल टू अमाउंट। यहाँ जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू पी। व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला फॉर द formula for the compound interest is P under bracket 1 plus R upon 100 whole power n. Is it clear? Whole power n. What is the P? P is known as the principal. P is known as principal, right? R is known as rate per annum. Okay, or n. What is n here? N is known as the time. N is known as the time. Is it clear? यहाँ पर भी अब हम चलते हैं इसी की जो है वो सिंपल वे में। और अगर मुझे यहाँ पर अब आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट, अब ये जो है यहाँ पर डायरेक्टली अमाउंट आता है। व्हाट इज ए? ए इज नोन एज द अमाउंट। ए इज नोन एज अमाउंट, right? Amount is equal to P under bracket 1 plus R, P under bracket 1 plus R upon 100 to the power n, where P is known as the principal or borrow, and R is known as the rate per annum, N is known as the time, right? अब अगर मुझे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट फाउंड करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। सो हाउ कैन वी फाइंड द आई? आई इज इक्वल टू ए माइनस P, right? It is the formula for the simple interest and it is the formula for the amount, right? It is the compound interest. अब मेरे पास यहाँ पर एक दो वर्कशीट भी हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। मैं उस कंपाउंड इंटरेस्ट को भी जो है वो आपसे डिस्कस कर लूँ ताकि जो है वो आपको मसला ना हो, ठीक है? चले आए इसमें देखते हैं, एक दो और मेरे पास शीट्स हैं। राइट, देखिए यहाँ क्वेश्चन में खुद जो है वो लिखा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्यूलो डिपॉजिट $345 in an account that earns 3.1% interest compounded annually, right? How much money in the account after the 4 years, right? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस करूँगा मेरे पास है क्या यहाँ पर ना। फॉर एग्जाम्पल $345, what is $345? $345 is the principal, right? What is the rate of interest? The rate of interest is 3.1% and it is compounded annually, right? How much money after the 4 years? So what is the time? Time is 4 years, right? How can we discuss this? For example,
यहाँ जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है मैं पहले उसको डिस्कस कर लूँ. व्हाट इज द डाटा? पी इज गिवन. व्हाट इज पी? पी इज गिवन $345. P is given $345. R is given 3.1%, right? Okay, and it is a compounded annually. What is the time? The time is 4 years. Now you have to find the amount. Say amount is equal to P under bracket 1 plus R upon 100 to the power n. Okay, what is P? P is known as 345. 1 plus R. What is R? R is given 3.1 and it will be divided. And what is the time? The time is 4. सही है. हाउ कैन वी कैलकुलेट? देखिए जब इसमें कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले वी विल सॉल्व इनसाइड द ब्रैकेट. इनसाइड द ब्रैकेट वी कैन यूज द कैलकुलेटर. वन प्लस 3.1 divided by 100, right? And we will take the power 4, right? So for example, सबसे पहले जो मैं इसके जो है वो पूरा ये सॉल्व करूँगा. You can write this in the same thing as calculator. For example, 1 plus 3.1 whole power 100, and then, right, the whole power is 4. Okay, so when you will divide it or when you will calculate, so what is the answer? The answer is 389.81, right? So what is the amount after the 4 years? 389.81. So now you can calculate the interest. ओके, इसमें इंटरेस्ट गिवन नहीं है, इसमें तो सिर्फ वो पता है, लेकिन मैं इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकता हूँ. हाउ कैन वी कैलकुलेट? यू नो ए इज इक्वल टू पी प्लस आई and I is equal to A minus B. So how can we calculate? Yes, what is the A? A is given 389.81 minus what is the principal? The principal is 345. So minus 345 and you will subtract. So what is the answer of this? The answer is $44.81, right? What is this? It is known as the interest. ठीक है. तो यहाँ पर इंटरेस्ट कहा नहीं था, लेकिन मैंने खुद से जो है वो इंटरेस्ट निकाल कर दिया है, बताया है, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि किस तरह से जो है वो निकाल. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट में पहले सिंपल इंटरेस्ट आता है, देन यू विल ऐड इन प्रिंसिपल, सो यू विल फाइंड द अमाउंट. लेकिन जब मैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्टली जो है वो आपके पास क्या आएगा? कंपाउंड अमाउंट आएगा. अमाउंट जब आ जाएगा देन यू विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रिंसिपल. तो आप जब आप प्रिंसिपल से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो व्हाट इज द आंसर? इट विल बी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, राइट? तो ये चीज़ थी जो कि सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, राइट? मैं फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 11? द क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन दैट Kim deposit $650 in an account that 4% interest compounded annually. How much amount? How much money in the account after the 2 years? So can we say that, for example, what is P? P is given $650. Okay, and rate. What is the rate? The rate is 4%. Okay, compounded annually. How much money after the 2 years? The time kitna given hai? 2 years. Okay, now you have to find the amount. First we will find the amount. पहले हमारे पास आएगा amount. उस amount के बाद फिर हम क्या निकालेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे interest. So what is the formula? The formula is for the compound interest is 1 plus R upon 100 whole power is n. What is n? N is known as a time. Is it clear? What is P? P is given $650. 1 plus R. What is R? R is given 4 upon 100. And what is the time? The time is 4. Right? Sorry, the time is 2 years. Right? Okay. So फर्स्ट वी विल सॉल्व द ब्रैकेट. और या तो आप ब्रैकेट में ऐसे लिख दें या फिर कंप्लीटली कैलकुलेटर के ऊपर इस तरह से लिख दें, तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा. फॉर एग्जांपल लाइक दिस 650 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 4 अपॉन 100, the whole power is 2. Okay, so what is the amount? The amount after the 2 years, the amount after the 2 years is 703.04, right? So what is this? It is the amount after the
अमाउंट इज आफ्टर द 2 years, राइट। तो अब आप ये देखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई, right? Amount, it will be equal to p plus I. So now we can find out I. How can we find this? A minus p. What is this? It will be equal to A. A is given 703.04 minus p. What is p? P is known as the $650. Okay, 703 minus 650. So when you will subtract this, what is the interest per year? It will be equal to, interest is given $53.04, right? तो ये हमारे पास था सिम कंपाउंड इंटरेस्ट। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर पास पेपर में, पेपर 2 में ज़्यादा आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। और पेपर 2 में इस तरह से आएगा, जैसे पहले फॉर एग्जांपल एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे, उसी के साथ पार्ट बी और सी में या तो सिंपल इंटरेस्ट होगा या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो वो खुद आपसे कहेगा कंपाउंडेड एनुअली एंड समथिंग। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको खुद से कैलकुलेट करना है और देखना है कि हमारे पास जो है वो क्वेश्चन किस फॉर्म में मौजूद है, राइट। तो ये तो था मेरा बिल्कुल एक सिंपल सा टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा जो है वो इसके बारे में ये पूरी चीज़ जो है वो करवा दूं। ये वर्कशीट भी बिल्कुल इसी फॉर्म में जो है वो आ जाएगी, राइट, एंड यू कैन सॉल्व दिस, राइट। ठीक है, तो ये मेरी आज की जो वीडियो है वो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, राइट। ओके बेटा।